ओके, तो हम दोबारा अभी लाइव पे हैं। ठीक है, ये कैमरा थोड़ा सा मेरी एक बार गोद में है, थोड़ा सिस्टम सेटअप को थोड़ा सा हिलाना पड़ा था। अभी हमें फाइंड आउट करना है कि आवाज़ आती है या नहीं। Connects each piece of your business. कूल, सो अभी आवाज़ आ रही है, राइट? ठीक है, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड, मैं अपना थोड़ा कैमरा एक बार ऑफ करूँगा। अब ये कैसे होता है यार, 2 मिनट। ऐसे सीखना पड़ेगा यार, चलो कोई बात नहीं, अपना ही घर है, देखो आप। ठीक है, तो सबसे पहले तो उल्टा आ रहा था मैं। ओके, वो वापस से चार्ज पे लगा देते हैं भाई। परफेक्ट, सेट है। चलो फिर, हाँ, अब स्टार्ट करते हैं अपन ये CRM वाला। यस, सो मैंने थोड़ा सा 5 मिनट का देख लिया, लेकिन कोई बात नहीं, आपके लिए दोबारा चला देंगे। Asks. अब सुनना ध्यान से, ठीक है? Hey there, I'm Courtney with HubSpot Academy. Take a minute and think about where you keep track of everything for your business, or even your personal tasks. Do you have one central place? Do you wish you did? If so, you've come to the right place. We're going to talk about a CRM and its role in growing any business. Let's start by discussing what a CRM actually is. A CRM, or a customer relationship management, is a system for managing relationships. This can be relationships with customers, users, leads, and even prospects. Any relationship that your company is engaging with and tracking can be captured and stored in your CRM. This means that your CRM plays a very important role in your inbound business. As your business grows, your CRM becomes the central place where all your information lives. Think about the quick answers to important questions that you have daily. Slowing down your team by not serving up this information easily can harm your business in the short and long term. This is the value of your CRM. It becomes the one source of truth for everyone in your business and connects each piece of your business, from your CEO down to your individual content creators, across to your sales reps and their managers, and to your customer success team. If you're a startup and only have a few people playing all these roles, then you need one place to communicate and track so that as you grow, you don't lose the information that could be stuck in someone's head, in their inbox, or across multiple files that get lost over time. समझे भाई साहब? तो मैडम ये कह रही है कि कुछ भी कर लो यार, कुछ भी प्रोसेस वगैरह, कुछ भी कस्टमर से रिलेटेड, लीड से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, कस्टमर सक्सेस से रिलेटेड, जो कि आपकी कस्टमर से बातचीत करते हैं, जो भी करते हैं, तो लाइक अगर आप स्टार्टअप हो तो आपको CRM टूल की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये अच्छे से मैनेज कर लेती है सारी चीज़ें। ठीक है, मतलब जो टूल है वो हेल्प करता है मैनेज करने में सारी चीज़ें, जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए आपके। मतलब आजकल कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए अलग अलग टूल्स यूज़ करती है। वन ऑफ द टर्म दैट आई केम अप, एक मिनट याद नहीं आ रही है यार, हाँ, सो पैंडाडॉक। सो पैंडाडॉक इज़ वन ऑफ द टूल जो मेरे सामने आया था, like to store all kind of contracts related to your customers and all. ठीक है, सो समझ में आया ना CRM टूल क्यों यूज़ करते हैं, क्या सीन है, यही बता रही है हमारी मैडम जी। ठीक है, On top of this, your CRM is at the center of your company's flywheel. You might be wondering, what exactly is a flywheel, and how does it relate to my company? A flywheel is a machine that stores rotational energy. When you add energy to a flywheel, it starts to spin. If you add more energy to it, it spins faster. In your flywheel, you have marketing, sales, and service. And in the middle of all of this,
you have your customers. And where are your customers stored? You got it, your CRM. As your company grows and your flywheel spins faster, your CRM will be the place where you continue to store your data to help arm everyone at your company with the information they need to continue to move your flywheel. So while your CRM helps your flywheel spin, it also supports your growth and helps you organize your business. Use it to organize the areas that help you do what you need to do for your business while being human and helpful. Use your CRM to store your contacts, companies, deals, tickets coming into your customer success team. Your business's human and helpful qualities will shine in every interaction across all channels you use to communicate. अब देखो भाई साहब, मैडम ने एक और बात बताई है आपको कि आप कौन सी चीज़ों से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहले तो इसने बताया है कि हमारे पास में है कॉन्टैक्ट्स मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, कॉन्टैक्ट्स मार्केटिंग से भी आ सकता है, एई से भी आ सकता है, कुछ लोग पार्टनर्स का भी यूज़ करते हैं, मतलब वो डिफरेंट डील करते हैं अलग कंपनी से कि ये काम करो, आप मेरे को 10 डील ला करके लीड्स और कॉन्टैक्ट्स ला करके दो, अगर वो कन्वर्ट होते हैं हमारे कस्टमर में तो आपको इतना % मैं आपको दे दूंगा, मतलब दलाल हो गए बेसिकली। ठीक है, तो वो हो गए कॉन्टैक्ट्स। लेकिन ला करके किसने दिए? या तो पार्टनर ने ला करके दिए, या मार्केटिंग टीम ने ला करके दिए, या एई ने ला करके दिए, या फिर कोई भी एसडीआर टीम भी ला करके दे सकती है, लाइक कोल्ड रीच आउट के जरिए। तो वो हो गए हमारे सारे के सारे कॉन्टैक्ट्स, मतलब उनका ईमेल एड्रेस है या फिर उनका फ़ोन नंबर। सेकेंड नंबर पे आता है कंपनीज। इस पे हम ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं कि कंपनीज का रिलेटेड क्या क्या इन्फॉर्मेशन हो सकती है, देयर रेवेन्यू साइज, देयर एम्प्लॉय काउंट, their countries, their region, okay, and there are many other fields. Then comes deals. So deals में क्या होता है? deals में ये होता है कि डील का नाम क्या है, ठीक है, कौन सी कंपनी से रिलेटेड है, फिर उनको प्रोडक्ट कौन सा चाहिए, फिर प्रोडक्ट के बाद में आता है कौन से डील स्टेज में है। शुरू में वो डिस्कवरी में थी, फिर वो डेमो में मूव हुई, तो वो एवरीथिंग सारा का सारा जो इन्फॉर्मेशन है कि अभी डील कहाँ पे है, तो वो हमें फाइंड आउट कर सकते हैं थ्रू CRM टूल्स। ठीक है, कितना पैसा शुरू में हमने गैस किया था कि इतने की तो डील कर ही लेंगे, लेकिन बाद में नेगोशिएशन होने के बाद में कम हो गया, तो ये कैसे, मतलब कितना नेगोशिएट कर रहे हैं हम, मतलब जितना हमने डिसाइड किया था कि इतने में तो बेचेंगे, क्या उससे कम में जा रहे हैं या ज़्यादा में जा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें डील्स वाली टेबल में स्टोर रहती है। फिर आता है टिकट्स में जो भी हमारा जो कस्टमर है उसने कुछ भी रेज़ किया कि लाइक मेरे को ये नहीं पता ये कहाँ पे हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सारी की सारी कस्टमर सक्सेस टीम के पास में चली जाती है। देन एवरी अदर इंटरेक्शन, सो वो सब कुछ आता है आपकी एक्टिविटी के अंदर। ठीक है, कोई भी आपने मेल भेजा अपने कस्टमर को और अपने लीड को या अपने कॉन्टैक्ट को, तो अब वो चाहे ह्यूमन जनरेटेड मेल हो या फिर सिस्टम जनरेटेड मेल हो या फिर सीक्वेंस जनरेटेड मेल हो। मैं आऊँगा सीक्वेंस भी क्या होता है, सीक्वेंस क्या होता है, या फिर सिस्टम जनरेटेड मेल्स क्या होता है, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझो कि वो सारे के सारे मेल्स या सारे के सारे इंटरेक्शन, रिप्लाईज, सब कुछ स्टोर होता है एवरी इंटरेक्शन में। तो ये हो गया हमारा पूरा का पूरा CRM टूल क्या क्या वो स्टोर करता है। लेट्स कंटिन्यू। In every interaction across all channels you use to communicate. And lastly, your CRM equips your team with the context they need to provide personalized and relevant outreach every time. With your CRM as the one location for all the details of your leads and customers, it's easy for everyone in your organization to gain insight into the state of your business and the status of every relationship. चलो ठीक है भाई साहब, ये म्यूज़िक तो हमें सुनना नहीं है, तो ये हो गया वाई CRM इज़ इम्पोर्टेंट टू योर बिजनेस। अब बात करते हैं क्विज की। चलो क्विज भी कर ही लेते हैं। व्हाट डज CRM स्टैंड फॉर? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, राइट। रिटेंशन तो नहीं होगा, रिलेशंस भी नहीं होगा, रिटेनमेंट भी नहीं होगा, तो फिर पहला ऑप्शन चेक आंसर। अरे हम हमेशा सही होते हैं। चलो नेक्स्ट। What role does a CRM play in an inbound business? It's where deals and sales information is stored. Yes, definitely. But inbound business की बात हो रही है, right? It's the central place where all marketing information lives. It's where a CEO can add their information on users. It's the central place where all information live. चौथे ऑप्शन के साथ जाएंगे, देखते हैं क्या होता है। That's right. Yes, I am always right.
तो ये हुआ भाई हमारा छोटा सा क्विज। 2 out of 2 हमने स्कोर किया है। देन कम्स हाउ इज द HubSpot CRM ऑर्गेनाइज्ड। 5 मिनट की वीडियो है, चलो इसको भी देखते हैं। HubSpot CRM is organized to help you grow your business. To do that, there are a few structures in place to help you. We're going to explore how your HubSpot CRM is organized by looking at the properties in the CRM and the records those properties are associated. अब ये याद रखना है प्रॉपर्टीज़, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ क्या होती है? प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल वही चीज़ होती है जो मैंने आपको अभी भी बताई है। क्या? रेवेन्यू साइज़। अब रेवेन्यू साइज़ ऐसा तो है नहीं कि कुछ भी हो जाएगा, मतलब कैसे भी लिख देंगे, नहीं, टेबल बनानी पड़ेगी, राइट। टेबल के अंदर अब जो ऊपर फील्ड्स के जो नाम होते हैं उनको बोलते हैं प्रॉपर्टीज़, ख़त्म कहानी। फिर उसके बाद में आता है नीचे रिकॉर्ड्स, ठीक है। तो एवरी इंडिविजुअल कंपनी से रिलेटेड उनका जो भी उनसे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, जो भी कच्चा चिट है उनका, तो वो सारा का सारा एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड में आएगा, एक पर्टिकुलर रो के अंदर आएगा, राइट। अलग अलग टेबल में उससे रिलेटेड अलग अलग इन्फॉर्मेशन हो सकती है, बट व्हेन इट कम्स टू वन सिंगल टेबल देन दैट पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन इज अ रिकॉर्ड और अ रो। सो दैट्स प्रॉपर्टी एंड रिकॉर्ड्स। अब आता है डी डुप्लीकेशन एंड एसोसिएशंस। एसोसिएशंस क्या होता है? एसोसिएशंस ये होता है कि लाइक मैंने डील तो क्रिएट कर दी है, ठीक है, लेकिन अब उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अलग टेबल के अंदर है जो कि है कंपनीज टेबल के अंदर। तो ये दोनों टेबल एसोसिएटेड है एक दूसरे के साथ में, डील टेबल एंड कंपनीज टेबल, ठीक है। सेम गोज विद द कॉन्टैक्ट्स टेबल। सो कॉन्टैक्ट्स टेबल कैसे रिलेटेड है कि उसके अंदर मेल आईडी पड़ा है या फिर वो कब सिस्टम के अंदर आया था, वो पर्टिकुलर डेट पड़ी है, तो वो सारी की सारी चीज़ें आ जाती है एसोसिएशन के अंदर कि कैसा इनका एसोसिएशन चल रहा है। फिर आती है पाइपलाइन, ठीक है। पाइपलाइन वगैरह के बारे में भी जानेंगे, थोड़ा आइडिया मेरे को भी के लिए कम है। चलो ये करते हैं। How information is deduplicated and the pipelines used to organize actions that occur. Let's first take a look at your properties and records in your CRM. There are two key components in the CRM: records and properties. Records are the individual contacts, companies, deals, and tickets. These records are what you add information to. Properties store information about a contact, company, deal, or ticket. Your HubSpot account includes a number of contact, company, deal, and ticket properties by default. However, you may need additional properties to store information for your business's marketing, sales, and service processes. To store this information, you can create custom properties. Before importing your data into HubSpot, do an audit of the properties that you use or want to use moving forward, and then create custom properties in HubSpot. On all HubSpot records, you'll be able to log activities, such as notes, calls, and emails, as well as create associated tasks or schedule meetings, in addition to the properties that are logged on the record. Next is the deduplication of the records that you have in HubSpot. Think about the current state of your company or organization, or where you want your company or organization to be in 2, 3, or even 10 years. You could have hundreds, even thousands of people adding data to your CRM. And with all these people adding information, there's an increased risk that the same information will be added multiple times. And why would you want the same record twice in your database? You wouldn't. So HubSpot deduplicates your records in a few different ways to keep your database clean. Both contacts and companies can be deduplicated based on specific property values. Contacts can also be deduplicated by a user token set within a cookie in the contact's web browser, or by the contact's email address. Contacts, companies, deals, and tickets can all be deduplicated by a unique record ID. This deduplication helps keep your database organized and prevents you from sitting and going through your data consistently to manually deduplicate. This process will continue to help you over time and make sure the data you're seeing is accurate. And with your records and properties set up, you'll start seeing how each piece is associated with each other. Your associations illustrate how everything comes together. Think about it like this. Each of the properties that you have are located
in each of the records you have, whether those records are contact, company, deal, or ticket records. The properties are filling in the records to give you personalized information on each person, company, deal, or ticket in your CRM. And the last piece of how your CRM is organized is your pipelines. Your pipelines are where you can see how different deals are moving through your sales process and report on that progress. This is where your deal records, which can include contacts, companies, and ticket associations, will be most present. And these records can live in the different pipelines you build based off your business. With your pipelines, you can customize the deal stages you associate with them. What happens in your sales process will be different than what happens in another company's. Make this personalized for what you and your business need to see. So that's how your CRM is organized. Records, properties, and associations keep your data connected and contextual. Pipelines show how your deals are moving and where your contacts and companies fit into those deals. Together, these pieces serve as the foundation of all the information you need to do marketing, sales, and service for your business. ठीक है भाई साहब, ये भी हो गया. चलो अब करते हैं वेयर इज़ एवरीथिंग लोकेटेड इन द HubSpot CRM. बट उससे पहले चलो ठीक है यही कर लेते हैं पहले, उसके बाद में 5 मिनट का ब्रेक लेंगे, पानी वानी पियेंगे कुछ. ठीक है चलो ये तीनों कर लेते हैं, फिर चलते हैं पानी. Your CRM is the foundation of everything happening in your HubSpot account. From any area of your HubSpot account, you can navigate to some of the key organizational elements of your database. When logging into your HubSpot account, you'll be brought to your dashboards page. This is where you can see your dashboard reports and where all the data in your CRM is being surfaced for you to explore. Navigate to the upper right-hand corner and select the Settings gear icon. From here, you can navigate to your properties, deals, and pipelines. From the top navigation menu, select Contacts, and then select Contacts from the drop-down menu. This is where all your contact records live. Now let's navigate to your other key records. From the top navigation menu, select Contacts, and then select Companies from the drop-down menu. This is where your company records live. From this screen, you can select a company and view other records, such as contacts and deals that are associated with that company. Click on the company name to see the company record. You'll see the associated records and other properties that it filled in for the specific. So I have told you, right, what is their annual revenue, so that will come here, which industry they are coming from, what is the company domain name and everything. Now I have told you that we have sent them automated mail or any sequence mails that our company will send to the lead or to the contact. Okay, so that will actually should come here in the activity. Okay, but activities can also be as like that particular deal has been moved from demo stage to POC stage. Okay, so this is again activity, so that will come into the activity, but this is a deal activity and I'm not able to see here contacts activity. Company. Lastly, navigate to deals by going back to the top navigation menu, selecting sales, and then selecting deals. This is where your different pipelines will appear and the associated deal stages you can set. If you have any open deals in your pipeline, you'll be able to select the deal record from the screen by clicking on the name of the deal. This will take you to the deal record, where you can set the associated records, such as company and contact records. Here, and then selecting deals. This is where your different pipelines will appear and the associated deal stages you can. So these boxes are deals. Okay, so appointment schedule है इन 3 के साथ में, then demo completed है इन 2 के साथ में, फिर decision maker bought इन 2 के साथ में, प्राइस नेगोशिएशन चल रहा है इस 1 के साथ में, और कॉन्ट्रैक्ट भेज दिया गया है, कॉन्ट्रैक्ट सेंट वो हुआ है सिर्फ इस 1 के साथ में. ओके, तो ये अलग अलग डील स्टेजेस हैं और उनके अंदर डील के काउंट है या फिर डील की इंफॉर्मेशन है. अगर आप इस पर क्लिक करोगे, ठीक है, ये जो भी है मतलब आइकन, तो फिर आपको हर एक डील एक नॉर्मल रिकॉर्ड के अंदर दिखाई देगी. वहाँ पे एक टेबल होगी, उस एक टेबल के अंदर इस एक पर्टिकुलर डील की स्निप एंड शेयर
इस एक पर्टिकुलर डील की सारी इन्फॉर्मेशन एक रिकॉर्ड में होगी, लाइक उसकी अमाउंट क्या है, क्लोज डेट क्या है, क्रिएटेड क्या है, इंडस्ट्री क्या है, जियो लोकेशन क्या है, कौन से डील ओनर के पास में है, फिर उसके बाद में अलग अलग मल्टीपल अदर थिंग्स लाइक MRR क्या है, ARR क्या है, ठीक है, और प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट है तो फिर मतलब जो साइन कर रहे हैं वो यूजेज है या ARR है, ठीक है, तो ये अलग अलग चीज़ें आती रहती है। और And set. If you have any open deals in your pipeline, you'll be able to select the deal record from this screen by clicking on the name of the deal. अब इसने एक डील पे क्लिक किया, ठीक है, अब उस डील से रिलेटेड सारी This will की सारी take you to the deal activities- record, where you can set the associated records, such as company and contact records. Here's a HubSpot pro tip. You can attach files to deal records, such as proposal agreements or images. This can be helpful to organize any outside information on your deals. ठीक है, तो अटैचमेंट पे अगर कुछ भी आप अपने स्क्रीनशॉट वगैरह कुछ भी लगा सकते हो, ये बकचोदी है, ठीक है। अब आता है क्रिएट कस्टम प्रॉपर्टीज इन HubSpot। अब देखो क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्रिएट करनी है। प्रॉपर्टीज मैंने बताया था कि फील्ड जो होते हैं, ठीक है, जैसे अमाउंट हुआ, प्रोडक्ट हुआ, वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज है। अगर अब आपको चाहिए कि लाइक नहीं भाई देखो बात सुनो, मैं अपनी नई कंपनी खोल रहा हूँ एंड नई कंपनी खोल रहा हूँ, तो फिर मेरे को चाहिए इसके अंदर अपने कस्टम वाले प्रॉपर्टीज़। कस्टम प्रॉपर्टीज़ जैसे कि देखो भाई एक बंदा आया एंड उसने बोल दिया कि मेरे को आपका प्रोडक्ट नहीं लेना, ठीक है, तो फिर मैंने उससे पूछा भाई क्यों नहीं लेना, तो वो कहता है कि उसने अलग कोई रीज़न बता दिया कि XYZ मेरा रीज़न है इसलिए मैं नहीं ले सकता। चलो ठीक है, फिर आपने दूसरे बंदे को अप्रोच किया तो आपको पता चला कि ये एक ही बंदे की दिक्कत नहीं है, मल्टीपल लोगों की ये सेम दिक्कत है कि उनको इस पर्टिकुलर रीज़न की वजह से आपका प्रोडक्ट परचेज नहीं करना। तो आप काम करो, एक अलग से एक प्रॉपर्टी आप बना सकते हो जहाँ पर आप ये डाल दोगे कि लॉस्ट रीज़न क्या रहा है, ठीक है। अब सेल्स पर्सन जब भी जाएगा एंड उसको पता चलेगा कि ओके ये बंदा जा रहा है, डील लॉस्ट हो चुकी है, तो वो पूछता है कि भाई रीज़न क्या है, तो वो रीज़न बताएगा एंड रीज़न विल बी मैंशन इन दैट पर्टिकुलर रिकॉर्ड कि ये डील लॉस्ट हुई थी, क्यों हुई थी, रीज़न क्या था। अब क्या होता है, बहुत एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, बहुत एक छोटी सी फील्ड हमने क्रिएट किया है, बट लॉन्ग रन के अंदर जब आपके पास में 2000 रिकॉर्ड्स और इवन मोर लाइक 20,000 रिकॉर्ड्स और मे बी इवन मोर 2 lakhs रिकॉर्ड्स हैं, ठीक है, तो वहाँ पे अगर आप देखते हो कि क्या रीज़न है, लॉस्ट क्यों हो रहे हैं, इतनी सारी डील्स लॉस्ट क्यों हुई है और हम इसको इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, सो दोज थिंग्स आती है एनालिटिक्स के अंदर एंड वहाँ पे मज़ा आता है, ठीक है। तो फिर वो अब ये बताएगी क्रिएट कैसे करते हैं, देखते हैं, चलो आ जाओ। Let's walk through the steps to create a custom property in HubSpot. Start by navigating to the upper right-hand corner of your HubSpot account and click the Settings Gear icon. In the left-hand sidebar menu, select Properties. Here, you can see a list of all existing properties. In the upper right-hand corner, select the button Create a Property. A panel from the right will appear to enter your property details. First, select the object type. You'll find that the default is set to contact, which means you're creating a property that connects to the individual contact level. If you click on the dropdown, you'll find other options for company, deal, product, and ticket. For this case, let's keep it as a contact property. Next, select a group to associate the property with. For example, will this property belong to contact information or email information? For this case, let's associate it with contact information. Then, enter the name of the property in the label field. This will be used internally and can be edited later when used in forms. If you're using this property for an integration and need to change the internal name, click on the markup icon to enter the unique identifier. After, in the अब देखो भाई मैंने इस पर काम किया है, तो अभी जो इसने ये इंटरनल जो नेम दिखाया था ना, कहाँ गया, icon to enter the unique. ये रहा। सो ये जो इंटरनल नेम है फर्स्ट अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर ओनर। सो जब आप इसकी API वगैरह कॉल करते हो ना, ठीक है, क्योंकि हम तो भाई टेक पर्सन है, ठीक है, हमें इसके साथ भी खेलना पड़ेगा, हमें टेक के साथ भी खेलना पड़ेगा। तो टेक के अंदर क्या होता है कि लाइक अब ऊपर वाला जो लेबल के अंदर जो इसने नाम लिख रखा है वो नहीं चलता वहाँ पे,
वहाँ पे चलता है इंटरनल नेम, ठीक है। जब भी आप एपीआई में कॉल करोगे इस फील्ड को, तो आपको फर्स्ट अंडरस्कोर टाइम अंडरस्कोर डॉग अंडरस्कोर ओनर को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ पे अगर आप ये कॉलम नेम डालोगे तभी वैल्यूज आएगी, अदरवाइज ये एरर शो करेगा कि भाई फील्ड ही एग्जिस्ट नहीं करता। Unique identifier. After, in the description field, provide context about your property to help team members understand the purpose of your custom property. Click Next. Then, click the Field Type drop-down menu to select a field type for this property. There are several options to choose from. For example, single-line text allows users to enter a word or a short sentence, while multi-line text allows users to enter a list or a paragraph of text. A single checkbox is used when you have two options, such as yes or no, and drop-down select allows you to provide several options, but limits users to selecting one option. You can find other field type options listed below. For this case, let's select a single checkbox. Then, if you'd like the option of showing your new property in HubSpot Forms, check the box beside Show in Forms. At the bottom, click Create to save your new property. And there you have it. You can now create custom properties in your HubSpot account. ओके भाई साहब, तो ऐसे तो क्रिएट हो जाएगा। अगर आपको उसको सर्च करना है कि कहाँ पे बनी है, ठीक है, तो यहाँ पे जाओ, सर्च प्रॉपर्टीज़ में लिखो उसका नाम, जो भी आपने लेवल में नाम लिखा है वो लिखना है, इंटरनल नाम नहीं लिखना है यहाँ पे। एंड फिर वो यहाँ पे अपने आप शो हो जाएगा। तो ये हुई बात। अब क्या आता है, प्रैक्टिकल एक्सरसाइज क्या करवाएगा भाई ये। क्रिएट ए कस्टम प्रॉपर्टी इन HubSpot, ठीक है भाई। इसके लिए तो आपको मतलब खरीदना पड़ेगा, बकचोदी करनी पड़ेगी। इसको एक बार स्किप करते हैं। तो ये तो हो गया हमारा सेटिंग अप योर CRM वाला 4 वीडियो वाला कोर्स, ठीक है। ओके, इसके बाद में आता है चैप्टर 1, टोटल 23 मिनट्स। ये क्या सीन है, देखते हैं इसको। 2 4 1 3 3 2 1, ये भी हो जाएगा। चलो ठीक है, पानी के लिए जाते हैं एक बार, ठीक है। तब तक के लिए जय श्री राधे। चलो ठीक है, अभी के लिए इसको पोस्ट करता हूँ, ठीक है।
तो बैक एट इट। चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। कहाँ थे हम? हाउ डज इम्पोर्टिंग इनटू HubSpot वर्क। हाँ, तो अभी देखो क्या करना है। अभी हमें ये करना है कि कोई भी हमारा जो डेटा है, लेट्स सपोज हमारे पास में ऑलरेडी 50-60 कॉन्टैक्ट्स है, ठीक है, वो ऑलरेडी है हमारे पास में, लेकिन हमें उनको इंपोर्ट करना है HubSpot में। अब ऐसे मैनुअली तो करने से रहे बहुत टाइम लग जाएगा, एंड मैनुअल करने में दो चीज़ें इम्पैक्ट करती है मैनुअल में। एक तो ये होता है कि लाइक टाइम ज़्यादा लगता है, पहला तो ये हुआ। दूसरा ये होता है कि ह्यूमन एरर जो होती है उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। ह्यूमन्स आर टेंड टू मेक मिस्टेक, ओके। कोई भी इंसान गलती किए बिना रह ही नहीं सकता। इट्स ओके, गलतियाँ होती है, बट हमें क्या करना है, हमें उसको बचाना है। लाइक हमें गलतियाँ नहीं करनी है। तो फिर उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? उसके लिए हम कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, उसके लिए हम ऑटोमेशन का यूज़ करते हैं। ऑटोमेट एक चीज़ कर देते हैं। इसलिए मैं हमेशा ये बोलता रहता हूँ कि चीज़ों को ऑटोमेट करना सीखो। अगर आप चीज़ों को ऑटोमेट कर लोगे तो फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपका टाइम सेव होगा, ठीक है, आपका ये भी सेव होगा, क्या कोई काम में गलती नहीं होगी। अभी मैं क्या करता था, आई स्टिल रिमेंबर कि जो मेरी पहली वाली कंपनी थी तो उसके अंदर मैंने ऑटोमेट करने का एक वो कोड बना लिया था, ठीक है, एंड मैनेजर मेरे को टास्क देता था। अब मैं क्या करता था, मैं उसको रन करता था। 5 मिनट के अंदर अंदर पूरी की पूरी शीट तैयार हो जाती थी, एंड मैं उसको बोल देता था कि ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ, ठीक है। एंड ऑफ द डे मैं उसको बोलता था कि सर ये कर लिया, एंड वो मेरे को शाबाशी देता था, जबकि वो 5 मिनट में हो गया था। और उसके बाद में मैं आराम से अपना फ्रेंड्स वाला सीज़न देखता था, ठीक है, जो भी वो सिटकॉम्स वगैरह है, तो वो आराम से देखता था। सो यूज़ करो यार, अपने ब्रेन को यूज़ करो, अपने ऑटोमेशन स्किल्स को यूज़ करो, पाइथन को यूज़ करो, ये सारी चीज़ें यूज़ करो, ठीक है। तो अभी हम तो बिजनेस एनालिस्ट हैं, हमें तो सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तो इसलिए हम CRM टूल को देख रहे हैं। अदरवाइज़ हमें घंटा इंटरेस्ट नहीं है CRM टूल के अंदर, लेकिन ज़रूरी है, तो इसलिए देखते हैं। हमें तो इंटरेस्ट है पाइथन के अंदर, ठीक है। लेकिन 2 मिनट में गेट बंद कर देता हूँ, ये बच्चे फिर से खेल रहे हैं यार। 2 मिनट। हाँ जी भाई साहब। सो अब स्टार्ट करेंगे हाउ डज इम्पोर्टिंग इनटू HubSpot वर्क। चलो जी, इसको देखते हैं। ये एक्चुअली वीडियोस वगैरह मैंने देखी नहीं है, ठीक है। दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम आई एम वाचिंग इट विद यू, क्योंकि आजकल मेरी पढ़ाई कम हो रही है, एंड आई बिलीव कि अगर ऑनलाइन करके करूँगा तो थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि मैं अभी गेम खेल रहा था, टू बी ऑनेस्ट। थोड़ी देर पहले सुबह से गेम ही खेल रहा हूँ, अभी 5:37 हो रखे हैं। तो चलो करते हैं, ठीक है। Hey there, it's Courtney from HubSpot Academy. Let's get your data into your CRM. Your data is what will help you create human, helpful, and personalized experiences for your contacts. So how do you get that information into your CRM? Outside of contacts filling out the forms on your website or being created through APIs, you'll bring your data into your CRM via importing. While importing your data will occur during your initial CRM setup, you'll continuously use this data for as long as you use the CRM. Much like automation in the world of inbound, importing is not a set it and forget it task. You'll use importing to get the right data into your CRM so that you can consistently provide a human and helpful experience for your contacts. So how does an import work with the HubSpot CRM? There are 3 easy steps involved when getting your data into the CRM. Step 1. Organize the data that's outside of your CRM in an Excel spreadsheet that's saved as a CSV file. Step 2. Use the HubSpot import flow to get the data uploaded into HubSpot. And step 3. Start using that data to personalize your interactions. Once your data is imported, you'll be able to track that data and thus your contacts' movements throughout your business. From deal stages to the individual contact records, you'll be able to customize your CRM to your business needs. But it all starts here with import. नॉर्मल था, अब दूसरा करते हैं। Before you import your data, you'll need to prepare your data. This means organizing your data outside of HubSpot before beginning the import process.
To make sure this process runs smoothly, you'll have a pre-import checklist with the following items. Prepare your import file, match your properties, review custom properties, review properties with record types, and lastly, remove the blank spaces on your spreadsheet. Let's walk through each step of your pre-import checklist to get your data ready for import. First, prepare your import file. To import your data into HubSpot, you'll need to convert your data into a CSV file. When importing, make sure that every piece of information has its own unique column in that import file. To do this in your import file, include a header row in your file and match each column header with a property. You can include values for any of the default HubSpot properties or any custom properties you've already created. HubSpot property stores information about a contact, company, deal, or ticket. Contacts are deduplicated based on email address or object ID, so make sure one of these properties is included as one of the column headers. When you import a contact that's already in your database, that contact record will be updated with any new property values from your file. If you have the automatically create and associate companies with contacts setting enabled, contacts will be automatically associated with company records after the import by matching the email address domain of the contact to the company domain name on the company record. If you want to assign an owner to an object during the import, you can do this by including a contact owner column in your file and adding the email address of the user to each row in that column. If you don't want to overwrite any existing value for a property, you can either include the current value in the relevant column or leave the cell blank. HubSpot will not overwrite a property value unless there's a new value present in the file. Next, match your properties together. When matching your properties, you'll first review HubSpot default properties. HubSpot has a number of pre-made, uneditable properties where important information about your contacts, companies, deals, and tickets is stored. If you're importing properties that are already HubSpot default properties, make sure that the value is already stored in HubSpot. You cannot edit some of the HubSpot default properties, but you can check on the values already stored in the default properties in Settings and Properties. Next, review custom properties. Check to see if the properties you're looking to import that are custom to your business are already created in HubSpot. And then review the properties with record types. Make sure you've made the distinction between contact, company, deal, and ticket properties. Is it clear what properties will be matched with the different record types? For example, is the company name property listed as a company property versus a contact property? By reviewing the custom properties you have created and making sure they match with the correct record types, you can help import the most useful and organized data. And your last item before importing will be seeing if your import file has any blank spaces, stray column headers, or loose information in your spreadsheet. If so, remove them. Those are your steps for reviewing your data before importing. They'll help you avoid errors during the import process and help you get your... तो भाई ये था पूरा का पूरा ऑप से रिलेटेड टास्क, ठीक है। इसकी मेरे को थोड़ी नॉलेज कम है क्योंकि मैंने कभी ऑप्स का काम किया नहीं है, ठीक है, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो इसने बताया कि लाइक आप CSV फाइल बनाओ, उसके अंदर फील्ड्स वगैरह लिखो। फील्ड्स एक्चुअली होने चाहिए अब स्पोर्ट के अंदर, ऐसा नहीं है कि बेंच कुछ भी लिख रहे हो, ठीक है। तो ये हुआ, फिर चलो नॉर्मल चीज़ थी। हाँ, ये भी था कि लाइक कोई भी वैल्यू है, लेट्स सपोज अमाउंट के अंदर है $100,000, अगर आप उसको ब्लैंक छोड़ दोगे तो वो 100,000 रहेगा। लेकिन अगर आप 100,000 मतलब जो पहले से सिस्टम में है लेकिन CSV के अंदर आप लिख रहे हो 80,000, तो फिर वो 80,000 से रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। और फिर ये एक्सेल ऑर्गेनाइजेशन टिप्स एंड ट्रिक्स फॉर इम्पोर्टिंग ऑफ स्पोर्ट्स, यार ब्ला ब्ला ब्ला। ओके, तो ये वर्कबुक है भाई। So it starts with well-organized data outside of HubSpot. This means you'll need to set up your Excel data sheet so that it translates seamlessly into HubSpot. With these Excel tips and tricks, you can start to organize your data and have a clear picture of some things to keep in mind before importing your data. ठीक है,
तो भाई ये हो गया पूरा। अब करते हैं हम हाउ टू रिजोल्व इम्पोर्ट एरर। सो इससे एक रिलेटेड किस्सा याद आया मेरे को। तो मैं जो हमारी होप्स पर्सन थी उसने अपलोड कर दिया कुछ कुछ, ठीक है। अराउंड 45 कॉन्टैक्ट्स का ईमेल उड़ गया। आई डोंट नो हाउ, बट 45 कॉन्टैक्ट्स का ईमेल उड़ना इज समथिंग बिग इशू इन स्टार्टअप्स, ठीक है। एंड 45 था, पता नहीं 90 था, दोनों में से कुछ एक था। फिर क्या हुआ, सो एक्चुअली मेरा जो CRM टूल जो है वो BigQuery के साथ में कनेक्टेड है, ठीक है। तो सारा का सारा डेटा BigQuery के अंदर डे टू डे बेसिस पे आता है, ठीक है। सो फॉर्चुनेटली फॉर हर कि वो जो डेटा था वो पहले का था, लाइक काफ़ी पहले का। एंड मैंने वो रिट्रीव करके उसको दे दिया 45 कॉन्टैक्ट्स, और उसने दोबारा से अपलोड कर दिया, ठीक है। तो HubSpot से उसने तो उड़ा दिया था, लेकिन BigQuery से मैंने निकाल करके दे दिया, क्योंकि BigQuery के अंदर ऐसा तो है नहीं कि जब HubSpot से उड़ा दोगे तो BigQuery पे भी उड़ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। BigQuery से आपको मैनुअली करना पड़ता है, ठीक है। तो ये सीन था उस दिन, उसकी बड़ी बजाई थी मैनेजर ने। चलो, how to resolve import error. Let's see this. Import errors can happen for a variety of reasons. In the top navigation menu of your HubSpot account, select Contacts and then Contacts from the drop-down menu. In the upper right-hand corner, select दो मिनट बहन, धीरे Contacts में जाना है, Contacts and then Contacts from the drop-down menu. ठीक है। In the upper right-hand corner, select Import and navigate to your import screen. Okay. Hover over the import file with errors. Click the More drop-down menu and select Download Error File. In that document, you can see which rows had errors. The error code will appear in the first column in the CSV file, column A. Some common errors are duplicate or missing email address, missing headers, and incorrect encoding. ठीक है भाई साहब, समझ गए। How to import single object into HubSpot. In your HubSpot top navigation menu, select the Settings gear icon. From the left sidebar, select Import and Export. In the upper right, 2 मिनट, ये सेटिंग के अंदर सेटिंग में जाकर के इसने चूज़ किया इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, ठीक है। फिर ये सिस्टम खुल गया, ओके। right-hand corner, click Go to Import. Once on your import screen, select Start an Import. Select File from Computer. After selecting what you'd like to import, navigate to the bottom right-hand corner and click Next. Select the number of files you would like to import. You can import multiple files at a time to associate your different records, such as contacts, with their associated companies. Click on the number of files and then select Next. Now select the objects you are importing. Objects are the collective groups of records in your CRM, such as contacts, companies, or deals. If you're only importing one type of record, such as contacts, you will select one object and click Next. Then choose the type of object you want to import. For this example, click Contacts, then in the bottom right, click तो अगर पहले मल्टीपल कर देते तो यहाँ पे मल्टीपल चूज कर Next. Click Choose a File. In the dialog box, select the import file from your device. Check the box if you're using the object ID to deduplicate your contact, company, deal, or ticket records. Click Next. On the map screen, HubSpot will automatically match the columns in your file to your contact properties. You'll see a preview of the property values from your spreadsheet in the Preview Information column. If any columns do not match an existing property, click the corresponding drop-down menu. Choose an existing property in your HubSpot account to map the column header to. Or click Create New Property to set up a new custom property in the right pane to which this column will be mapped. To skip importing this column from your spreadsheet, navigate to the bottom right-hand corner and check the box besides Don't Import Rows in Unmatched Columns. After you've mapped all the columns from your file, click Next. On the Details screen, click the Import Name field to enter a name for your import. If you've turned on General Data Protection Regulation or GDPR functionality in your account, use the Set the Legal Basis for Processing a Contact's Data drop-down menu to select the lawful basis of processing. Once you've set the options for your import, navigate to the bottom right and click Finish Import. After the import begins, you'll be taken back to the imports dashboard.
If you want a list of your recently imported contacts, you can create a list from the Imports dashboard. Hover over the name of the contact import. Click the More drop-down menu and select New Contacts List to open the list builder. In the upper left corner, click the pencil icon and give your list a name. Click And or click Or to add more criteria to your list. When you're done, navigate to the upper right-hand corner and click Save. ठीक है भाई साहब, ये भी हो गया. अब हाउ टू इम्पोर्ट विद एसोसिएशन इन HubSpot. क्या टाइम हो गया भाई? 5:49. ओके, चलो ये करते हैं, फिर चलते हैं चाय पीने. In your HubSpot top navigation menu, select the Settings gear icon. From the left sidebar, select Import and Exports. In the upper right-hand corner, click Go to Imports. Once on your import screen, select Start an Import. Select File from Computer. Navigate to the bottom right-hand corner and click Next. ये देखना रही थी क्या? How to import with association in HubSpot. Now, you will select the objects you are importing. As you are importing multiple files, you will select multiple files with associations to import. Click Next. Now you will see the options of the different types of objects that you can import with associations. You will only be able to select 2 to make associations with during import. In this example, select Contacts and Deals. Click Next. On the Select and Import File screen, you will select both of the files you want to import. In this case, your contact file and your deal file. Click Next. You will now choose how to associate your data. Your files share column headers in common. This will tell HubSpot how to associate your data. Choose which common column you want to use to associate your data. In this case, deal name. And then the common column between your files should also be the unique key for one of your objects. This unique key is used to associate objects based on the individual data, but only belongs to one object. In this case, deal name is associated with deal objects. Click Next. On the map screen, HubSpot will automatically match the columns in your files you are importing. Similar to when you import a single file, you will match the properties you are importing. To skip any columns without a match, navigate to the bottom right-hand corner and check the box, Do Not Import Rows and Unmatched Columns. After you've mapped all the columns from your file, click Next. On the Details screen, click the Import Name field to enter a name for your import. If you've turned on General Data Protection Regulation or GDPR functionality in your account, use the Set the Legal Basis for Processing a Contact's Data drop-down menu to select a lawful basis of processing. Once you've set the options for your import, navigate to the bottom right-hand corner and click Finish Import. Now you can go and see how your data is associated inside of HubSpot. In this case, how your contacts and deals are associated together. Navigate to your top main navigation and select Sales, and then select Deals. Here you can navigate to the deal name or multiple deal names that you imported with the associated contacts. In this case, selecting HubSpot Deal and seeing the contacts that I associated during import. And there you have it, all of your data imported with its associations built. ठीक है भाई, ये तो एसोसिएशन वाला डेटा हो गया, लाइक डील और कंपनीज का जो भी इसका एसोसिएशन वाला डेटा था वो इसने अपलोड किया था यहाँ पे. Now that you've imported your data, you can view your newly imported data in 2 ways. First, you can view the newly imported records from the main screen of whatever record type you imported. In this example, that would be the main contact screen. Secondly, you can view the newly updated properties from the individual record. In this example, that would be a contact record. So let's walk through the first method. In the top navigation menu, click Contacts and then Contacts to see your newly imported contacts. If you imported a different record type, such as companies, deals, or tickets,
You'd follow the same process to access those main screens by selecting the appropriate object in the main navigation menu. Now for the second method. After navigating to the main contact screen, click the name of the contact you want to view to access the contact record. If you imported a different record type, such as companies, deals, or tickets, you'd follow the same process by accessing the appropriate main screen and clicking on the name of the company, deal, or ticket you wish to view the record of. On the left-hand side, navigate to the About section. Select View All Properties to view all the properties available. On the right-hand side, use the search bar at the top to search for one of the properties you updated via the import. Hover over the property, and on the right, you'll see a button. Click this button to add this information to your... ठीक है भाई, ये भी हो गया. Additional option for getting data into HubSpot. Sync data via PySync or import Salesforce records. ठीक है, तो ये इन्होंने बता रखा है Salesforce से कैसे HubSpot के अंदर लाना आपको. Sync data with HubSpot using PySync. When you sync data using PySync, HubSpot talks directly with other app that holds your contact data to send information back and forth. Check out this lesson to see how you can get started with the PySync. PySync, ठीक है. Import Salesforce record. If you have the HubSpot Salesforce integration enabled, you can import Salesforce leads, contacts, accounts, opportunities, tasks and campaigns into HubSpot. ठीक है. फिर ये कह रहा है कि review this lesson to start using the Salesforce integration into HubSpot. ठीक है भाई साहब. अब ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, ये बकचोदी है. मतलब टू बी ऑनेस्ट बकचोदी नहीं है, क्योंकि सीखने वाला इंसान प्रैक्टिकल से सीखता है. क्योंकि मैं कंपनी में सीखूँगा. यहाँ पे ये मेरा पर्सनल कंप्यूटर है, मैं HubSpot के साथ में कुछ भी छेड़खानी करना नहीं चाहता. ठीक है, तो चलो फिर दैट्स इट. आई सपोज आज रात को भी ऑनलाइन लाइव आने का देखते हैं. ठीक है, कहाँ गया. यस, सो दैट्स प्रीटी मच इट. अभी चाय वाय पीने जाएंगे, देखते हैं फिर क्या करते हैं. पाइथन पढ़ना है तो रात को आते हैं ऑनलाइन. कितने बजे के लिए आए? अभी 6 तो बज चुके हैं. 7 8 खाना भी खाना होता है यार. मैं बेंगलोर में रह रहा हूँ, अकेला रह रहा हूँ, एंड खाने की बहुत प्रॉब्लम होती है टू बी ऑनेस्ट. ठीक है, पापा बोल रहे हैं शादी कर देते हैं, देखते हैं. चलो अभी के लिए दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. ऑल सेट आई सपोज. HubSpot का अभी थोड़ा और पढ़ना है, धीरे धीरे करेंगे, एक साथ में कुछ नहीं करेंगे. चलो फिर, सी यू, पीस आउट.